Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss lipids. So let's move to the whiteboard. So dear students, lipids. An important topic from this chapter regarding long, short as well as MCQs in board questions. So first of all, what are lipids? Lipids are heterogeneous group of organic compounds which are related to fatty acids. Clear? So these are the lipids. ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये हेट्रोजिनस है. हेट्रो का मतलब डिफरेंट. अभी आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं बाकी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर प्रोटीन से. So they are a heterogeneous group of organic compounds which are related to fatty acids. Yeah. And dear students, first of all, we'll discuss there some important features. The first one is solubility. So, as far as solubility is concerned, they are insoluble in water, but soluble in organic solvents like ether, benzene, alcohol, or chloroform, etc. etc. Clear? So as it is an organic compound, तो solubility के लिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, like dissolves like. तो ये वाटर के अंदर insoluble है बिकॉज कि वाटर जो है दैट इज इनऑर्गेनिक, while the lipids they are organic, तो इसमें किसी भी तरह से हल नहीं होते. और जहाँ तक बात है इनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, चूँकि ये भी ऑर्गेनिक है वो भी ऑर्गेनिक है, तो इसलिए उनके अंदर ये हल हो जाएगा. नाउ what is we are going to discuss is their important functions or features which we can say. Number 2 is the exoskeleton of arthropods. तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 उसमें डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा किंगडम एनिमेलिया में. तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो दे आर इनवर्टिब्रेट्स, दे हैव एक्सोस्केलेटन. द एक्सोस्केलेटन is built up of chitin and waxes. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, वैक्स क्या है इसमें आगे चल के पढ़ेंगे. दैट इज अ लिपिड, व्हिच इज अ क्लास ऑफ लिपिड. तो उनका एक्सोस्केलेटन उनके लिए बहुत अहम है. इसी तरह से if we talk about the plants, they have cutin
in plants. That is also a layer of wax. Plants have cuticle and the cuticle possess a layer of wax called cutin that prevents transpiration. Clear? इसी तरह से dear students, they also store energy the lipids store double amount of energy because of high carbon hydrogen bonds proportion and low oxygen proportion. Clear? As compared to any other compound or carbohydrate. तो डियर स्टूडेंट्स, जो लिपिड्स हैं ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं एज कम्पेयर टू द लिपिड्स, एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. आपने पढ़ा था प्रीवियस ग्रेड में 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं तो दे प्रोड्यूस 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, while the proteins they also produce from 1 gram they produce 4 kilocalories of energy, while the lipids they produce 9 kilocalories of energy. That is the double amount of as compared to carbohydrates and the proteins. तो उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अभी आगे चलकर हम इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ तरह के लिपिड्स जो हैं, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रेशो आपको और या उसका प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और ऑक्सीजन का रेशो जो होता है वो कम मिलेगा या उसकी प्रोपोर्शन कम मिलेगी. और आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी. जब ये बॉन्ड बन रहे होते हैं तो इनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो फिर डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर कर रहे हैं तो हम फिर कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ ज़्यादा खाते हैं. सो द रीज़न इज़ दैट इज़ आवर मशीन. अल्लाह ताला ने जैसे हमारी ये मशीन बनाई है इसमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ग्लूकोज, दैट इज़ द ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज दे आर इंस्टेंट सोर्स, सो दैट इज़ वाई वी ईट दैम एंड वी प्रेफर दैम. और जबकि अगर हमें लिपिड से एनर्जी चाहिए तो lipids must be converted first of all into carbohydrates and then carbohydrates, that very carbohydrates oxidation will provide us energy. So that is the reason कि हम डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हुए भी हमारी बॉडी इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट आम हालात में नहीं करती है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, द कार्बोहाइड्रेट्स, द लिपिड्स they also act as insulators. The lipids provide
a layer under the skin to prevent heat loss during the cold environment. क्लियर? तो ठंडे मौसम में हमें हीट चाहिए होती है, वहाँ पर ये इंसुलेटर का काम कर रहे होते हैं। हमारे स्किन के नीचे मौजूद है, ये इसकी एक लेयर मौजूद है। इसी तरह से जो बर्फ़ वाले इलाकों में जो एनिमल्स रहते हैं लाइक द सील्स और वेल्स, तो उनकी स्किन के नीचे भी अच्छी खासी मोटी एक तह होती है चर्बी की, दैट इज कॉल्ड एज ब्लबर। वो आप सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 के अंदर, इन थर्मो रेगुलेशन। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी अगर हम क्लासेस की बात करें, वी टॉक अबाउट द क्लासेस of lipids. So in our book there are given 6 classes of lipids. Number 1 is the acyl glycerols. Number 2 are the phospholipids. Then number 3 are sphingolipids. And number 4 are the glycolipids. Number 5 are waxes. And number 6 is the terpenoids. क्लियर? तो इसमें से जो डिटेल्स हैं वो 4 की दी गई हैं। स्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स, इनकी डिटेल्स नहीं दी गई फिलहाल। बस आपको ये ज़रूर बताता चलूँगा, दे हैव गॉट सम स्ट्रक्चरल रोल in cells. खास तौर पर स्फिंगोलिपिड्स, they are involved in the formation of our central nervous system. वहाँ पर उनके जो membranes होती हैं, cell membranes, वहाँ पर. Now we'll start from the first one, that is acyl glycerols. The first class of lipids. So what are the acyl glycerols, dear students? The class of lipids which are made up of esters of fatty acids and glycerol, and they are also neutral. They are neutral, and also, dear students, the common acyl glycerol is, the most common is triacyl glycerol, and what is ester? Ester is a compound formed by the reaction of an alcohol with an acid.
Clear? Here is this example. C2H5OH, that is ethyl alcohol, plus this is acetic acid. Clear? Alcohol and acid. ये एसिड ग्रुप और साथ में ये कार्बोक्सिल ग्रुप, और जिसके साथ भी कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाता है वो एसिड बन जाता है, इसी वजह से इसको एसिडिक ग्रुप भी कहा जाता है. सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर लिखा और बुक में भी एज इट इज़ लिखा हुआ है. सो यहाँ से क्या होगा, द OH from this alcohol and H from the acid, they will combine and the water is removed and all these are connected. C2H5 and OCOCH3. Clear? So this is called as ethyl acetate, that is an ester plus water molecule जो यहाँ से remove हुआ है. Clear? Now I'm going to draw the structure of triacyl glycerol, which is given in our book. So triacyl glycerol is formed by 3 fatty acids. So these are 3 fatty acids. They will be combined with glycerol. Glycerol is a simple 3-carbon alcohol. Clear? So these are 3 fatty acids, 1, 2, and 3, and this is glycerol, the simplest alcohol or the simple alcohol. What happens over here? Now look, the hydrogen of the acid and OH of this alcohol, which is represented by this box, they will unite to form water molecules. So 1, 2, and 3. 3 water molecules यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से 3 water molecules plus अब ये 3 fatty acids, they become linked with these 3 carbons. So how they will linked? The second fatty acid and third fatty acid. Here. So this is the structure of triacyl glycerol, which is also called as triglyceride or TG. ठीक है?
ये तीनों इसी के नाम हैं। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आप अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल मीन्स जब आप ब्लड केमिस्ट्री करवाते हैं और ख़ासतौर पर उसमें लिपिड प्रोफाइल जब करवाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स और फिर उसके बाद ये ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को भी शामिल किया जाता है। यही बेसिकली लिपिड्स पे हम उसको देख रहे होते हैं। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो एसाइल कोलेस्ट्रॉल्स हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अमंग देम इज द फैटी एसिड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे एसाइल ग्लिसरॉल्स को और मज़ीद कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।